हेलो एवरीवन, मुझे भी नेविगेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के फाउंडेशन लेवल की और इस बिगिनर लेवल की, जिसके ऊपर बेस्ड आपसे यही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या रेगुलर बेसिस पर एक्सेल में इन फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली इस वीडियो इस टॉपिक की डिमांड की एक हमारे व्यूअर थी, जिन्होंने कहा था कि ऐसा एक्सेल पर कुछ जनरल फंक्शन है जिनको ऑफिस में रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाता है। उनकी एक लिस्ट बना के दे दीजिए कि फंक्शन की वर्किंग समझा दीजिए। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के लिए है, तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट और हर बार रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाले फंक्शंस में सम फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जी हाँ, सम फंक्शन के बहुत सिंपल सा है कि जो भी डेटा सेट आपको दिया गया है, उस डेटा सेट को आप की परसेंट लगा कर सम और सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। या सेल रेंज को आप सिंपल सेलेक्ट करोगे और ये क्या करेगा, आंसर देते। नंबर वन। दूसरा, आप ऑल्ट प्लस इक्वल साइन प्रेस करके भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो दे आर डू टू वेज। नंबर वन, देयर इज सम फंक्शन एंड देयर इज अ और फंक्शन। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी सिंगल सिंगल टेबल्स है। अगर ये मल्टीपल टेबल्स हो देन यू कैन सिंपली ड्रैग द वैल्यूज। नाउ सम फंक्शन को एक बार और इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैंने जैसे ऊपर वाले टेबल्स में अलग-अलग इस्तेमाल किए। एक बार मैंने फंक्शन और एक बार एक ये किया। मैं चाहता हूँ ये दोनों टेबल्स में एक साथ सम फंक्शन अप्लाई कर दिया जाए। तो मुझे करना सिर्फ इतना है कि मैं सीटीएल बटन को प्रेस करके अपने दोनों डिजायर लोकेशंस को सेलेक्ट करता हूँ और वी नीड टू प्रेस ऑड इक्वल एंड द आंसर इज दिस। तो ये है हमारा सबसे पहला फंक्शन, सम फंक्शन, जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द शॉर्टकट की ऑफ ऑड प्लस इक्वल। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट? द नेक्स्ट फंक्शन इज average function that will calculate the average value, yani total number of observations. That means sum of observations divided by number of observations. इसके लिए भी आप इक्वल साइन एवरेज फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवरेज फंक्शन है यहाँ पर जो किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करके उनका एवरेज कैलकुलेट कर सकता है। अगेन व्हाट वी डू नेक्स्ट, अगर इस तरीके की रैंडम टेबल्स है, अगर टेबल मेरे पास सीक्वेंस में है, तो मैंने आपको बताया कि आप सिंपल इक्वल साइन लगाओ और ड्रैग कर लो बात। अभी मैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3 इन सभी पर एक साथ एवरेज फंक्शन ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन लिया मैंने। अभी ये फंक्शन मेरी यहाँ से करेक्ट, तो मैं इस फंक्शन पे ट्राई करता हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। तो अपने अपने सेल रेडियो देखिएगा कि एवरेज फंक्शन अपने आप रैंडम टेबल्स को या एवरेज कैलकुलेट कर चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज मिनिमम, that will simply calculate the minimum value. Again, you need to press equal sign MIN. Select the range, it will show the lowest value of any array or any data set. तो जो भी कॉलम रेंज आपने सिलेक्ट कर रखी होगी उसकी मिनिमम वैल्यू आप दे सकते हो। अगर आपके पास किस तरीके से मल्टीपल टेबल्स है, then you don't need to type again and again. Then simply we can use the CTRL button. Select the locations of desired answer. Then we press the MIN function. Select the last location wherever the function will be shows and press the Ctrl plus enter button to apply the formula in entire table. It will show or reflect on the respective cells. It will the min function. Now see the next function, the same as max function, will return the highest value. Then again we need to do the same thing. A tab concept is max function again. तो मैक्स फंक्शन की हेल्प से आप कोई भी हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी रेंज। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी लास्ट मेरा जो लोकेशन दिख रहा है मैक्स फंक्शन, तो वहाँ था मैंने डेटा सेट सेलेक्ट कर रखा है। और अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ, देन वी गेट द आंसर ऑफ ईच इंडिविजुअल टेबल्स। द नेक्स्ट मेजर पार्ट इज दैट कि आप मैक्स फंक्शन को कुछ सिंपल मैक्स क्या मैक्स सम एवरेज किसी भी फंक्शन को कुछ फिक्स डेटा सेट या कुछ फिक्स वैल्यूज देकर भी इसके आंसर्स रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक प्रीडिफाइंड कांस्टेंट वैल्यूज पर भी आपको आंसर रिटर्न कर सकता है। ये क्या सम एवरेज मिन फंक्शन ये सभी ऐसा काम कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी सी द नेक्स्ट, देन इट इज द
प्रोडक्ट फंक्शन दैट विल मल्टीप्लाई द वैल्यूज। तो जो भी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि जो डेटा सेट है वो सा चेंज है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इक्वल साइन प्रोडक्ट फंक्शन, जो कि क्या होगा, सिंपली वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करना है। इसीलिए पर आप रिस्पेक्टिव सेल एड्रेस को यूज करके और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके भी काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था हमारे पास। नाउ द बिल, इस पर भी आप प्रोडक्ट फंक्शन ना लगा करके इक्वल साइन अमाउंट पी टू यूनिट, ये भी एक तरीका है वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने। और इन दोनों में ही मैंने अलग अलग फंक्शन ड्राइव किया और ड्रैग किया हुआ है। सपोज मैं इसको सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोडक्ट या किसी भी तरीके से मैं इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो कोड फंक्शन लिया, देन मैंने सेलेक्ट किया अमाउंट ऑफ यूनिट, प्रेस, और बाकी सेल्स पर आंसर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए अगेन डोंट फॉरगेट द मैजिक CTRL प्लस एंटर। एंड द लास्ट वन इज in all these tables, on these three tables, we only follow the relative references. That means all cell addresses will automatically change. But there is a one more situation in which the one cell is fixed, need to be absolute address, and other column cells is need to be reflected. That means change or dynamically updated. Then equal sign. Select this value, we need to fix, then we need to fix this value, we press F4 button. Then into first din of absent, it will return the result. And जिस वैल्यू को मैंने यहाँ पे फिक्स किया है वो है हमारा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। जी हाँ, ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है जो किसी भी फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हुआ डॉलर साइन से, जिसको आप बना सकते हो F4 की को प्रेस करके। ओके, so this is the product function scenario. Now see the next scenario, that will be the concatenate function. Not only concatenate function is responsible for whatever the tasks have been done, or we can some other alternative to use the concatenate mechanism. Let's see the examples. Okay, there is the example number one, Amit and Sharma. So we need to combine these values. So we can press equal sign, then concatenate. Then we need to first name select, comma. Then we need to select last name, then enter. This is a way to add these values, concatenate function. Then we can also use another operator which is known as the ampersand operators or address operator or and operator, जिसकी हेल्प से भी मैं concatenate जैसा काम, that means addition of the text, मैं कर सकता हूँ। कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल से लगा देता हूँ, फर्स्ट text value, then ampersand and a space, or we need to replace the at sign at the rate symbol. Then ampersand sign again, then we need to add out the germanium.com. So it will return the concatenation mechanism. So this is another way of mechanism, add the values. Now move on the next and the last method, last way to add all these values. What we can do, we need to do one more thing, there's a magic of Excel. 4522 dash 323050. This is the dataset pattern. And again, we don't need to apply any concatenate, any AND operator, then we need only to press Ctrl plus E. That is the flash fill. See the magic. See the magic. This is the way. 0212 263 652. This is another mechanism. You can also use the concatenate method. So you can use the concatenate, then comma, as a separator we need to press the minus sign or hyphen, and the contact convert is another mechanism to add these values, then we need to simply double check. And the last one, you can also try the ampersand operator to add these values.
So there are so many mechanisms to combine these text entries here. There are so many mechanisms to combine these entries, the equal sign again, then ampersand sign, again ampersand, then we need to use the number. So this is the mechanism to add on these values. So there are three ways to add on any values. The one number one is the magic of flash where you can try telephone numbers that we can also use the concatenate method. Then we can also use the ampersand operator. And to understand the concept of flash fill, you can watch our other video that we have already recorded or uploaded on the channel. That is a magic of flash fill. A very detailed concept of flash fill over there. Now the next function is trim. Trim function is used to remove the extra spaces. All these are the challenges on the regular basis in office work. So there are Amit. The negative pattern is that after Amit name have just so many spaces. Then there's Sharma, and after Sharma we don't leave any space, but the sheet will give in with the lots of spaces there. So how we can remove these extra spaces? We can simply, number one, we can combine these options in the trim option. So first of all, मैं press करता हूँ trim function के लिए trim and try the concatenate also, then comma, only single space will be there required, and the last is trim. The trim function will remove the additional extra spaces of any text value in Excel. So if we see these values and we need to try all these values over there with the help of paste special, then we get without any space. There is no extra spaces, but unfortunately there are extra spaces that will be removed from the cell with the help of trim function. Same as there are the last trim function, then again we can use username ampersand @ symbol, then ampersand gmail.com. But whenever we use this values as a value, then extra spaces are also mentioned there. So we need to put this equation in trim function. Again, though better you can get the concept of trim function, that will simply remove the extra spaces, and I will show the quite of a result also. So see the difference between normal ampersand operator concatenation and concatenation with trim function. Same as there are spaces over there. So अगर मैं spaces को consider करूँ, then again cortex concatenate will create a problem. And even अगर मैं flash fill का magic try करता हूँ, then it will also create a problem for us. So see the magic, and again watch it. 323050, and again we try the flash fill. So there are not any extra spaces at it. We can also remove the extra spaces by using the flash fill magic. There will no reflections. So this is the trim function. Now see the next function, that will be the length. That length function. Length function will return the length of any string or length of any set of numbers. That means how many digits in a number and how many characters including the space in any name or any text value. Simply we need to press. What we need to do, we need to apply the same function length in our trees table. So we don't need to apply and apply and apply. Only simple, sir. Select the entire cells by using the CTRL or simple length function. Select the result and Ctrl plus enter. All sections will consider their own data set and it will return the number of values over there. Due to security reasons, we never display any kind of mobile number, including a 10 digit that can be of any person. So, due to the privacy,
we didn't consider 10-digit mobile count. Move on the next function that will be, see the list. If SUMIF and SUMIFS function. So let's on. This is the sum function that we need to mention lots of things. First of all, if function में try कर रहा हूँ यहाँ पर conditions के लिए, तो मेरे पास पहले कोई condition होनी चाहिए. That will be applicable only on the messages or calculations and so on. So try the next. The condition is there. If the total will be greater than equals to 50 or 70, if the total value, that assumed value in a set have been greater than 70, then what we need to put, see the function clearly, the logical test that will be done. Value if true, what we have to do, yeah, what we have to show. Then if the condition is true, then we need to show the pass. Otherwise, we need to put the if. Both messages are defined by user or you. It will automatically change that situation or condition and return the result as per condition. Same as the designation part. In these three sections, we will apply individual sections because we have different kind of data set and we can have a different kind of situation over there. But we need to try multiple if, which is known as the if within if function. So let's consider this one. If the salary will be, let's try what we see. If salary greater than 60,000, the designation will be administrator. Yeah, admin, comma, if salary greater than equals to 45,000, then manager, comma, if salary. There are a number of conditions that we have to live with. Okay, if the salary greater than 60,000, the designation will show the admin. The current range is not below 60,000, then we will show the next condition. Can it will be a 45,000? Then yes, then show the manager. Then another situation has to be created. We see the 30,000. If we have the value more than 30,000, then we need to show the trainer and if otherwise, if less than 30,000, it will belong to back office. Now, how many ifs are included? 1, 2, and 3. So there are number of ifs we need to close. Then automatically this equation has been raised and it will be considered as the situation. See the function. So this is the function that you can take a screenshot, you can pause the video and note it down on your phone. So move on to the next. You need to calculate the same as great bonus function. Then again, the salary scale will be 60,000, the bonus will be some other percentage need to be calculated over there. Give the salary during 45,000. Let's move on the percentages and calculations. If salary greater than or equals to 60,000, the bonus or the basic salary will be 25%, comma, if salary greater than or equals to 45,000, comma, bonus will be 20%. If salary greater than or equals to 30,000, bonus on the salary will be 80%. Otherwise, for remaining salaries, the bonus will be 50%. This time, no message has been shown. It will show the calculation part. So, the first salary has been calculated as per calculation of more than 60,000 values, 25%. Now, see the value, this one. So, let us suppose to arrange these values on the single cell. Then we need to press Ctrl Shift 1 to set the value at decimal of 2 places. And the last segment of if
here we can use the multiple if again also. Then अगर परसेंटेज 66 से ग्रेटर देन है या 75 80 से ऊपर है तो मैं कहता हूँ फर्स्ट डिवीजन है. देन सेकंड डिवीजन है 60 से ऊपर है. थर्ड डिवीजन है 50 से ऊपर है, अदरवाइज फेल है. तो वी नीड टू अप्लाई मल्टीपल इफ्स or multiple if. It means nested if. If percentage greater than equals to KT, then the grade will be first division, comma if percentage greater than equals to 70 or 50. Let us suppose it will consider 60 divisions. Then we need to plot the second division. If percentage greater than equals to 50, it will third division. For remaining other will be considered as a fail candidate. Again, we need to press the second division will consider second division, third division, and so on. So this is the nested if or if within if or multiple if we tried this function. There are so many situations that we can occur in the office or in work premises on the Excel. You can put on these functions. See the next index value. There is some if and some ifs. So one of the most important function that we need to try. There is some ifs and some ifs. So what we need to do? If we try the sum of apples value, how many amount of apples? There are 2 or 3 times need to be typed apple, apple. It will return the 150 on the basis of given criteria. See, sum is the range will be, so the range will be the sum. What will be the criteria? The criteria will be apple. And what will be the sum range? The sum range is our amount. Very simple. One, two. If you change the criteria, but August change will result also. So this is sum if function. Sum ifs we can try so many criteria. Just wait. What we do? Oranges and novel. So what we try equals by sum ifs. There is a range. So again there is a range, comma criteria. So there will be a criteria, comma. We need to put the sum ifs. So criteria range again we need to try. So okay, some criteria range 1. So first criteria range will be apple. Sorry, we need to retry some function, some if. Sum range, the sum range will be here, comma criteria range 1, that will be the criteria range 1, comma criteria 1 or criteria is this one. Criteria range 2, the second criteria will need to be implemented in the same way. And both will be matched. Both will be told as a AND operators. So this is the oranges navel 20, oranges navel 20. If we replace anyone, honeycombs, it will return them. If we replace the apples, navel, there will be 0. But if we put the moleculars, so it will show the result. Avoid the fuzzy. So this is the SUMIFS function. So on the next, and this is the last segment of our video. Today, now, date, day, year, and month is a simple function on the basis of day. So it's a simple function. If we need to show the today dates, we need to press today function. It will return the current date. For this, we need to check the system date that will be correct. That should be correct. If we get the wrong date in our system, then it will return the wrong date. Current date and time, for this purpose, we need to try it. Now function. Now day function, day, month, year need to convert in the date value. So if we give the date
year and month. For day year 10, we need to type a month. Year 2024, we need to convert this month. So we need to simply try the date function, which we need to select the year, then month, then day value. Now, this function, the date function, will convert the given three individual values that represent the day, month, and year need to be converted in the date format to see the result and see the function. The same as if we get the result that is 30th of March 2025, need to break down in the day, month, and year. So we have the function, but the name itself, day function, will return the day serial number. Month function will return the month, and the year function will return the year. So this is the year function that will be returned. So guys, this is the video that will help you to better understand the concept, how we can work in office premises as a founder, as a beginner, including this function. There are so many other functions that will be on the part of MIS section, that will be part on VLOOKUP, SLOOKUP sections. So further we can discuss some other video. Till then, keep learning and keep listening.